The human population of the world is unevenly distributed over the Earth's surface. So here we have certain factors which are controlling the distribution of the human population. One of the factor is climate, second is relief feature, third is location, and the other areas are also very important in the form of factors. But these are the major factors which are controlling the human population distribution. Uh, why climate is important? Because of the activities. Human activities related to production and services are located in those areas where the climate is suitable. We have example of Pakistan. The Pakistan's economy is controlled by agriculture because the climate and certain other physical factors like soil, which is suitable for agricultural area, are available for the human activities. So that's why we have human cluster there. So second important जो factor इसमें है that is the location. The location, if that country is located closer to the water body, that factor is also very important because most of the trade activities and the things which are related with the regional or global level, उसमें location is very important. The third one which is the area where we have the factor of the distribution of the human population is the relief features. The plains are suitable for human settlement as compared to the mountainous regions. Desert is not suitable because of the climatic conditions not good there. So these are the areas where we can discuss a lot of things. Now, the Earth human population at the beginning of the 20th century stood at about 1.5 billion. सो ये बात हो रही है 20th सेंचुरी के स्टार्ट की जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन जो है 1.5 बिलियन थी बट बाय द एंड ऑफ दैट सेंचुरी it exceeds 6 billion population. Why? Because of the certain things which are favorable for the human growth या human population की जो growth में some factors are involved जिसमें आप ये कह सकते हैं with the change of technology जिसमें we have the example of the medicine के उसके आने के बाद life saving drugs, the things which are life saving से related medicine थी वो market जब हुई हैं तो then you have the growth which is actually in the human population. This slide shows the major clusters of the human population. Again, the latitudinal extent जो है इसमें हम एक important factor है कि जैसे जैसे हम ये इक्वेटर है तो अगर हम इसके नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो रही है because these are the areas where we have the below freezing temperature. So is one of the factor के the things are not suitable for the human clusters. And most of the clusters are present in those regions where we have the agricultural land. Like example, हमारे पास एक China की है, then we have South Asia and the areas which are closer to the middle latitude जहाँ rainfall available है, the things which are closer to the sea sites, ये sea sites यानी water body के पास होने की वजह से and the Europe which is actually controlled by the coal mining. इस वजह से यहाँ पर ह्यूमन क्लस्टर्स हमें मिलते हैं सो सम आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द रिसोर्सेज के वहाँ पर माइनिंग के रिसोर्सेज मौजूद थे पावर सोर्सेज थी जिसमें फॉसल फ्यूल अवेलेबल हैं या मेटल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं तो ह्यूमन क्लस्टर जो है वहाँ पर मौजूद है सो दोज आर एक्चुअली द फैक्टर्स विच आर important for the distribution of the human population but all clusters are unevenly distributed. We have example of China कि इज़ अ वास्ट एरिया यानी ये सारा चाइना अगर हम देखते हैं तो इसका मोस्ट ऑफ द रीजन इज़ अंडर लेस दैन 20 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन बट जो 50% एरिया जो है हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया because of certain opportunities and the suitability. During the 1960s and 1970s, the rate of population growth increased so fast that disasters seemed to lie ahead in the form of mass famines and global social dislocations. Since then, technologically advancement have expanded food
production even faster than the population has grown. And the global population growth rate has begun to slow, but as we will see, the problem resulting from the population explosion still prevail. Hundreds of millions of people, mostly children, remain malnourished. Many countries, mostly in the poorer part of the world, continues to have population increase with which they cannot cope. So the human population increased from 1950 to onward. Now today it is closer to the 7 billion population. Why? Because of the certain opportunities or the things which are favorable to the human growth. इसमें मेडिकल साइंसेज भी हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है, टेक्नोलॉजी का फ्लो भी है, इकोनॉमिक कंडीशन भी हैं. सो द पॉपुलेशन nowadays is closer to the 7 billion. Now here we have certain stages which are important for the growth of the world population, human population, but it is actually controlled by natural increase. What is natural increase? Natural increase is actually the birth rate and the death rate. If we are studying the crude birth rate with crude death rate, that is actually the part of the natural increase. And now इसमें हम स्टेज 1 में देखते हैं कि जब प्री इंडस्ट्रियल एरा था तो उस वक्त इसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत स्लो थी, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी क्योंकि वहाँ पर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कम था एंड अवेयरनेस भी नहीं थी. द सेकेंड स्टेज जो है उसमें हम देखते हैं कि अर्ली इंडस्ट्रियल एरा में रैपिड ग्रोथ हुई, यानी लोग जो हैं वो अवेयरनेस आई सोसाइटी में और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में हम देखते हैं कि चेंज आने से उसकी जो बर्थ रेट है उसमें जो है वो तो सिमिलैरिटी रही, लेकिन जो डेथ रेट थी वो कम हुई क्योंकि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं मार्केट हुई. थर्ड स्टेज में हम दोनों में देखते हैं कि जो सडन उसमें डिक्लाइन है वो बर्थ रेट में है क्योंकि मैच्योर इंडस्ट्रियल स्टेज था और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमें स्लो नज़र आता है क्योंकि उसमें जो मार्केट की जो अवेलेबिलिटी थी, जो प्रोडक्शन जो थी वो उसमें राइज हुई और बर्थ रेट जो है उसमें भी कमी, अवेयरनेस की वजह से कमी हमें देखते हैं. स्टेज 4 में जो पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा है उसमें और स्लो हो गई है बिकॉज वी आर पासिंग थ्रू nowadays a post-industrial era. Now in this part of the world we have the developed economies जहाँ पर जो population growth है that is closer to the zero and जो developing economies हैं वहाँ पर भी population growth कम हो चुका हुआ है. जैसे हम we have example of India, we have example of China and again in Pakistan which is closer to the 2.1% annual growth percentage है growth rate में. सो वाई? बिकॉज ऑफ द जो एजुकेशन है उसने एक अहम रोल प्ले किया है फॉर द रिडक्शन इन द बर्थ रेट. So the focus of the study of the population geography is on the spatial aspect of demography. Demographic issues and problems vary not only region to region but country to country. So what is demography? Demography is the main characteristics of the population. उसकी स्टडी को हम डेमोग्राफी कहते हैं और ये वेरी करती हैं, इनके इश्यूज प्रॉब्लम वेरी करते हैं रीजन टू रीजन. जैसे बताया कि उसमें डेवलप वर्ल्ड है तो वो एक रीजन है, डेवलपिंग वर्ल्ड है तो वो एक रीजन है एंड कंट्री टू कंट्री. इन पाकिस्तान का जो है अफगानिस्तान से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी डेमोग्राफिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ द जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के डिफरेंसेस की वजह से.